यूके में कैरियर करना चाहते हैं, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन 2026 जनवरी फरवरी बैच के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज मैं यूके के लिए कोई भी प्रोग्राम्स में, be it business studies, psychology, engineering, management, or law, whatever programs you want to make a topmost university in United Kingdom. तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कौन कौन सा यूनिवर्सिटी हमारे पास अवेलेबल है 2026 जनवरी फरवरी बैच के लिए। यू जस्ट गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, फी स्ट्रक्चर्स, हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द वीजा इन यूके itself. Hello everyone, welcome to EduNum, guiding careers since 2007. Since 19 years, some students providing best of best services for foreign universities across the Indian students. If you want, आज मैं बताने वाला हूँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, सो कल लंदन में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, अगर आपको कैरियर बनाना है कोई भी प्रोग्राम्स में, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, यस, वी आर द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज फॉर जनवरी फरवरी 2026 बैच. Here is the list of universities, of course. Coventry Universities, Teesside Universities, University of East Anglia, Middlesex University London, University of Law, Regent College of London, Sheffield, Hallam University, Oxford International Educational Group, University of West London, University of Leicester, and of course Edinburgh Napier Universities and University of Greenwich. So dear students, these are the topmost universities if you want to make a career. Any programs. Again, once again reminding you, business studies, law, psychology, engineering, management, cyber security, the data analytics, business analytics, whatever career you want to make a career, for 1-year programs for post graduations or 4-year program, UG program in UK, topmost universities. So we have the strong tie-up with across the UK. So dear students and parents, any doubt, any queries, interestingly, if you want to make a career special for PG courses, tuition fee will be £10,000 to £20,000. यानी कि roughly if you calculate in Indian currency, 12 लाख से लेकर 20 लाख के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएट MBA, master, any master program will be completed. Interestingly, after completion of 1 year, you can get a chance officially to stay in UK for 2 years. So the average salary package after completion of the postgraduate program in UK itself, the starting salary will be 20 to 25 lakh per annum in Indian rupees. Same way, UG programs maybe again you can stay 2 years official visa to study. In fact, after completion of the job 2-year tenure, in fact, you can continue for more if your work is excellent. So my dear students, UK is the best opportunities for study abroad. Any universities, how to apply, what are the documents required, एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोसीजर है, everything EduNum is going to guide you and tell you everything. As you know, 19 years of experience and expertise for study abroad admissions. Any doubt, any queries for UK MBBS, for UK study abroad programs 2026 February or March 2026 batch, call this helpline number. We will guide you and tell you everything about UK. Thank you very much. Namaskar.